everyone is a weird different version of each other. That's what social media is becoming. काफी क्राइसिस वाला सवाल पूछ लिया तुम. Take office bubble, family bubble, friend bubble, social media bubble. I am a different person everywhere. Nameless podcast show with two immature podcasters wannabe. My name is Vishnu. This is Zen. Of course you know him, but we have Dhruv directing us. The vibe of this show, I think, what we want to create is to just have जैसे बातें मार रहे हैं दोस्त बैठ के. Correct. And I think the idea of an honest conversation. I can't get over the honest word. I'm so sorry. But Like what I realize is that जो कंटेंट की हम बातें मारते हैं ना जब हम कैमराज में नहीं होते, that content is so much more valuable and so much has so many jokes that are so organic and so many stories that are so well told. Yeah. And I think भाई मतलब मैं भी ever since I spoke with you तभी मैंने podcast actually सुनने शुरू करे seriously. Otherwise what I usually would do कि मैं यहाँ से वापस आते समय कोई ना कोई podcast सुन लेता था, audio cast सुन लेता था. But अब मुझे लगता है कि हाँ genuinely यार this is a great format and I'm not just saying it because I'm doing it, but मुझे genuinely लगता है कि interesting format है. क्योंकि ट्रैफिक तो नहीं कम होने वाला. ट्रैफिक तो कहीं नहीं कम हो रहा. पहले तो था कि चल 15 सेकंड अटेंशन दे रहे हैं हम रील टिकटॉक पे, अब हमको कुछ करते हुए किसी और चीज को टेंशन. नाउ इट्स मल्टीटास्किंग, लाइक वी आर ड्राइविंग एंड वी आर वॉशिंग डिशेस एंड लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट एंड ऑल दीस थिंग्स. हाँ मतलब we'll figure it out. We'll figure it out. I think वही nervousness है मेरे अंदर. What's your favorite podcast जो तुम सुना है अभी तक? I can't मतलब again like I would say Joe Rogan ही मैंने ढंग से सुना है. But I do listen to a lot of other Pakistani podcasts also. एक there's this app I used to have in my phone called Patari, which is an app for Pakistani music, but they later ventured into podcasts, etc., etc. So उन्होंने ना कुछ audio books डालना शुरू करी थी. So there was this writer called I can't recall the name, some guy called Yusfi. So he would write humor. तो मैं उससे सुनते सुनते I got into this knack of listening to podcasts. Then I started listening to Manto and everything. तो वहाँ से that was my initialization. Manto the writer. तो उसके podcast सुनना शुरू करे, talking of his writings, उसके audio plays etc etc. So yeah, that was my initial listening to podcast. आज हमने influencers के बारे में बात करेंगे because clearly a lot of influence is here. Yeah, total one influencer in the room. But हाँ मतलब see, it's not, I think मुझे problem उस word influencer से है because like you said, Joe Rogan is the biggest influencer of the world. He is the most influential person हाँ on this correct, planet. most influential person. I think वो differentiation of understanding a content creator versus an influencer is very different. Even if you're posting a picture on Instagram with your 500 followers, you're still posting content, right? But some people like you, like us on a different tangent, have managed to turn it into a profession. I think that is what we are going to talk about here, isn't it? I downloaded Instagram in 2015. I was very late into this game. मैं Orkut पे भी late था, मैं Facebook पे भी late था, but Instagram पे तो बहुत 2015-16 में मैंने download करा. I started using Instagram in 2014 or 2014-2015. हाँ. But तुम छोटे थे ना? तो I was very young. हाँ, मैं 2000 में उमर नौकरी कर रहा था, तब मैंने download करा Instagram. Instagram में तो major shift आ गया. Like you can tell कि उनका पूरा का पूरा perspective ही अब short form videos है. Instagram, like imagine like you build a company and your middle icon is that plus sign to post pictures, that middle thing, right? You change that, the center of your brand. Change हो गया. You change it to reels, अब reels आती है उससे. Like you've transitioned the whole brand into something. सही क्या होना है TikTok को? यार TikTok तो रोता होगा मुझे यार. और reels कितनी सही टाइमिंग पे आया इंडिया में? मतलब देखो मेरी तो एक conspiracy theory है that कि the moment TikTok would have banned, they would have realized कि चलो this is the right time to start reels in India. I would say यार reels ऐसी बना के तो रखा होगा, साल लगती हैं ऐसी चीज़ें बनाने में. हमें reels के launch होने से 15-20 दिन पहले पता था कि reels launch हो रही हैं. We had the opportunity to create more reels, bank it, but उस वक्त पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या कैसे करना होता है, because we were also very new to TikTok. But this helped me a lot. मैंने ना लॉकडाउन में मैंने TikTok बनाना स्टार्ट किया था as a form of, because मेरे को लगा TikTok पे ना मुझे कोई फॉलो नहीं करता. I have no pressure of being funny, unfunny. That's my experimenting stage. And I wanted to do stand up, पर मेरी फटती है, बहुत बुरी फटती है. ठीक है, क्योंकि मतलब कभी जिंदगी में ऐसे कन्फ्रंटेशन तो करिए, माँ बाप ने कॉन्फिडेंस दिया नहीं. जेल भी जा सकते हैं. जेल भी that fear is always there. जेल भी जा सकते हैं. So
when Reels came, I had this bundle of videos that I had already seen and I knew how they performed on TikTok, and I uploaded them and I blew up, and like that blew up. So like one video blew up, like this stupid video got 25 million views. Which one? मैं एंड्रू गारफील्ड जैसा लग रहा हूँ उसमें, मैं दिखाता हूँ कि एंड्रू गारफील्ड ये है, मैं ऐसा लगता हूँ, व्हाटएवर, दैट्स वेरी लाइक आई मेक अ फनी जोक्स एज वेल, बट 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग, that means that 1 out of every 60 मैथ्स. नहीं, बट दैट इज नॉट यूनिक व्यूज ना, मतलब एक आदमी ने अगर 4 बार भी देख लिया, 4 बार क्यों नहीं भाई देखेगा. इट्स नॉट यूनिक व्यूज नहीं होते. इफ आई अपलोड माई रील ऑन माई स्टोरी एंड इफ आई अपलोड इट लाइक थ्राइस, उसके व्यूज बढ़ते थोड़ा. इफ आई अपलोड इट वंस, मतलब मान लो मैंने एक बार देखा तुम एंड्रू गारफील्ड की तरह लग रहे हो, हाँ, मैं सेव कर लिया, हाँ, फिर मैंने शाम को फिर देखता हूँ एक बार, अब लग रहा नहीं लग रहा है. But isn't it like that? Like I think. But even if, I mean, yeah, nothing to take away from that. Even if that 2.5 crores is not, but it's still a huge number. But this is what TikTok did as well. They pushed creators on purpose. They made people famous. They made these pillars of like, you know, कि कोई भी famous बन सकता है. And suddenly everyone wanted to be, who doesn't want to be famous? Correct, correct. यार मतलब मेरा तो मानना है कि ये सब, and if I allowed to call it, शुरू ही डब स्मैश से. कि लोगों ने डब स्मैश बनाने शुरू करे, सिंग करने शुरू करे. The only thing Dub Smash did not do was to make a social media out of it. They did, didn't they? अच्छा हाँ, but डब स्मैश की ऐप नहीं थी. लोग डब स्मैश बना के इंस्टाग्राम पर डालते थे. Coming back to what you were saying, that हाँ, that one video blew up to 2.5. That blew up, and like मेरे पास तो content पड़ा था. Like imagine like sitting and I have 60 videos to post for that made particular. 2 महीने की छुट्टी हो गई तुम्हारी. I had nothing, and I was still creating in that time because I was at my creative peak. मेरे को आ रहे थे videos idea funny जो भी है, and it just came and I kept uploading and all the videos were like working. I was getting like 20,000 views on my Instagram video, 20,000, 30,000 maximum. All of a sudden I'm getting millions of views. Like M आ रहा था लिख रहा. क्या कीजिएगा इतनी धनराशि? I had nothing. I had no idea, but yeah, that was my lockdown story. But your lockdown story is much more interesting. नहीं, मैं honestly I had started gymming in March. So before the lockdown, मैं ऑफिस में नीचे जिम जाता था. अच्छा. और so मुझे ना just पहले. Sorry to say, but I find gyms the most intellectually bankrupt places in the world. Like वहाँ किसी, it's just big dick energy over there. लोग आते हैं वहाँ यार, कसम खुदा की. And मतलब I could. This is a T-shirt. Gyms are big dick energy. Big dick energy, toxic big dick energy, and the most intellectually bankrupt places I've ever been to. Anyway, so मैं यहाँ नीचे मार्च में लॉकडाउन में जिम जाना शुरू हुआ था, and I got regular, which was and थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना शुरू किया, so I understood कि क्या actually चीज़ें क्या हैं. Then मोदी जी came one day 8 PM से Monday, Monday, Sunday, and उससे 2 दिन पहले ना जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ था. So one of my cousin was getting married. तो मेरे पापा had gone for the wedding. I was supposed to go later. And ये वो मैंने कहा शादी तो नहीं हो रही. So he called me like भाई मैं घर से ही कर रहा हूँ और तू आ जा यार भाई प्लीज़ भाई. And he was very close. मैं गया गाड़ी उठाकर मैं कानपुर गया. कानपुर. हाँ. तो मैं 23 को पहुँचा और मैंने सोचा था कि 24-25 को उसकी शादी होगी, मैं वापस आ जाऊँगा पापा को लेके. बिकॉज ही ऑल्सो कीप्स ऑन वेल. मैंने कहा दिल्ली में हो जाएगा. मैं जो 24 को उसने बिना बताए लॉकडाउन कर दिया. मैं क्या था आपके पास है? 2 शॉर्ट्स थे, 4 टी-शर्ट थी, 1 कुर्ता पजामा था शादी में किसी और के घर पे. हाँ, शादी में पहनने के लिए. ये जो भी मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा था वो सब ठस हो गया. क्योंकि क्या यार, मतलब जब when you life is thrown out of gear, आप कहाँ छत पे जाके टहलोगे, घूमोगे. और बनाना ब्रेड खाई, डालगोना कॉफी पी, हर दुनिया की हर चीज़ जो मुंह में पेट में डाल सकते सब डाली. So I gained more weight, and then when I came back I had nothing to do. So जिम में तो कुछ खुला नहीं था. मैंने Amazon से 2 डंबल ऑर्डर कर लिए थे और I used to just work out at home. So I lost about 20 kgs. But what helped you? Like what was like your biggest thing? कि मतलब you found this और ये भाई ये है like. I understood the science behind it. कि वर्कआउट HIIT करो, कार्डियो करो, ये करो, कीटो करो, वो करो. I just realized that okay, I just need to work in a calorie deficit, understand how many calories I'm consuming and understand how many I'm burning. मैंने 5 महीने लगातार वही करा. मैंने सब खाया, बिरयानी, छोले भटूरे, everything I ate, but I just controlled my calories. Post my wedding, मैंने सब खाया.
I think, but lockdown and content. I would come to that because eventually, like people called me from different publications and say, you know, we have realized the importance of digital videos in the lockdown. मैंने कहा तो तुम हो गया, तुम उससे पहले होश नहीं था कि अगर तुम्हें लॉकडाउन में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई videos and digital. So where were you before that? But I think video has peaked. Correct. Video Of has course peaked. It's post peak now. And OTT has peaked. कि मतलब for my father, and my father is 70 हाँ मतलब 70 plus and not very tech savvy now, but he was the one to tell me कि यार केबल कटवा दो, अब क्या जरूरत है, because he is hooked on to OTTs. He moves from one app to another and he watches them. So for you, and like you said that TikTok बंद हुआ and ये हुआ, but how was this lockdown thing for you? As a creator, for me, it was great. Like, correct. I had I know a lot of people had the worst time in the lockdown. I had the best time in the lockdown. As a creator, Personally, मेरे को ज़्यादा लोग पसंद, मतलब I like people, I like having conversation and everything. I love that. but only with a few people. Or only with a few people, and even strangers, I love that. But I can't like go out, have like just chill with people. But you do. I have to. Correct. But I will get back to that. We'll get back to that. The social element of being a social media. yeah, I have to do that. I have to go meet people and all. That's not a problem anyway. Like that's not a problem in my life. But the thing was, like, I was in my room. I had my camera. I had all the things I had once saved up for. Like And a you had camera. Govind. I had Govind, my brother. Oh, yaar. So I did everything that I have ever wanted to do without any pressure. So I was getting paid by this beautiful company for creating for the first time in my life. Like I was getting paid enough to like sustain myself. Okay. So I did not have any pressure, financial pressure. I did not have any mental pressure, or like my mind was diverted because आज तक 4 साल अपनी ज़िंदगी की मैंने कंटेंट कैसे बनाया, या तो मैं कॉलेज था या मेरी कोई फर्स्ट जॉब थी, ठीक है. सो माई फर्स्ट जॉब वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट. सो आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर माई लिविंग. सो आई हैड This was your first job, no? I used to work in a ginger ale company before this. I was their social media manager and stuff like that. So I had nothing else to do. I had Govind, I had my camera, I had my laptop, and I had everything that I wanted to do. So it was, for me as well, it was like, bro, अगर तूने अब नहीं कुछ करा ना, like there is no better situation for you in your life. If you don't do it anything now, then you're like, this is not for you then. Like maybe you don't love this enough or something. So it was great for me. I wrote a lot of stuff. I started making mockumentary. I made my first mockumentary, which I found like this is what my peak content is. This is what I love making. Video, like reels and everything is nice. Sure, it's not nice actually. Fuck that. It's not. It's very. It's what's trending right now. देखो मेरा चैलेंज तो हमेशा से रहा है कि फॉर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक वी हैव बीन ब्रेड ऑन समथिंग वेरी डिफरेंट. मतलब हमने एंड प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा हमने बहन जो 4-4 घंटा हमने भारत एक खोज देखी है. हमने बस श्याम बेनेगल देखा है, 3 घंटे का नैरेटिव देखा है, यूं देखा है, हॉरिजॉन्टल देखा है. हमको जब बोला गया कि भाई इसको यूं बनाना है 15 सेकंड के अंदर, मैं तो कान फट गए भाई. Wow, that's a shift of a universe. That's a shift of a universe. It actually is. कि and eventually मतलब I had my reservations कि नहीं ये क्या फ्रेम है, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, बिकॉज हमें आदत वही है ना. बट हाँ, सो आई फाइंड रील्स वेरी चैलेंजिंग कि 15 सेकंड के अंदर स्टोरी कैसे बताऊँ. हमें तो आदत है पॉजेस लेने की, धीरे धीरे बोलने की, बिल्डअप की. एंड व्हेन यू गाइज डू इट, तब मुझे लगता है कि भाई ये तो मैं खेल कर ही नहीं सकता कभी. I don't want to say one is good and one is bad because that's a very बचकानी चीज़ है बोलने के लिए. YouTube versus TikTok. That was stupid. That was that was highlight of lockdown. हाँ. But like आमना अब I can say what Reel does. Like in future I can't even imagine, but right now I can say that Reels is something, or like short form content is something that you bring audience with. You feed them mid form content and then they stay for your long form content. I know like there is no one who makes the kind of videos that I make that I know of, like or a prominent creator that I make of, right? So the people who have the same taste as me come to me for that content. Like that's my community. But there are a lot of people who just know me by my reels, which is what I'm okay with. But a lot of people have just seen my Punjabi, all those sketches and stuff like that, which is also cool. But these are not people who are gonna stay for like, if I want to, which was coming back to your shelf life wala question, like the longevity comes from long form content. बट आई थिंक विष्णु यहाँ पर एक ये भी फैक्टर है कि हम लोग ना बहुत हम लोग फिर भी एक सेंस ऑफ प्रिविलेज से बोलते हैं कि
कि थोड़े से रिसोर्सेज हैं, लाइक फॉर यू आई वुड से दैट हैविंग Govind, having a camera, having a laptop was a privilege enough, and having time most importantly. It was, हाँ, time biggest asset, yeah. तो और मैं ये देखता हूँ कि तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट ये प्रिविलेज के बिना हैं वो. फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब मेरे तमाम दोस्त हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, बट उनके पास कोई कंपनी नहीं है जो उन्हें महीने का 15,000 रुपये भी दे दे कि भैया सस्टेन कर लो, कंटेंट बनाओ. I agree, but I disagree as well. I'll tell you why. Because I think my biggest privilege was the experience of long form content that I had. I made videos for 4 years without any recognition, and I knew so much about my content, about like my self-awareness, about the kind of content that I can make, and I have like a good hold on. That when the opportunity came, I had everything ready. So that was my privilege. So basically, your story starts 4 years before times. Yeah, है ना, technically. I was making content when I had a job. I had a 7,000, like I worked for 7,000. क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? मेरे लिए तब 7,000 इतनी बड़ी चीज थी ना. Like I never went to for clubbing parties and stuff like that. हाँ, 7,000 सैलरी थी. 7,000 लाइक वहाँ पे जाते भी अच्छा नहीं लगता, भैया पानी दे दो, मीन रेगुलर. So I never went and never liked doing that either, or was whatever, either way, potato. But what short form content does is that it already gives you a, like you don't have that journey of exploring yourself as a creator. You skip that journey to being somewhere, and you have very little knowledge about yourself, is what I feel. Because तुमको it's like 17, 18, 19 साल के, even 20 साल के किसी बच्चे या बच्ची को you give a platform कि तो जो करना है कर. Had this been in US, he would go and shoot. एक एलिटिस्ट जनता थी जिन्होंने कॉन्स्टेंटली जज करा कि ये क्या छपड़ी टिकटॉक बना रहे हैं. एक हमारी जिम वाली जनता थी जिनको छक्का मुजरा दिख रहा था खाली. मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई टिकटॉक वाज द फर्स्ट टाइम दैट कंटेंट वाज डेमोक्रेटाइज्ड इन इंडिया, कि हर आदमी कंटेंट बना रहा है, हर आदमी कंटेंट बना सकता है. उसको देखने का एक पर्सपेक्टिव ये था कि भाई लोगों की एक्टर बनने की एक चुल मिटाई उसने. Everyone had, which everyone has, and we are a country of cinema. Like Hindustan is synonymous to cinema. But what I liked was that it democratized content. It did. It took it beyond you who was a content consumer, जिसके पास access था दुनिया भर का content देखने का, एक sensibility थी. Because मेरी नज़र में तो just having purely education is also a privilege. कि अगर मैं तुम बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस था, प्रिविलेज इनफ फॉर मी एज कंपेयर टू पीपल हु स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर. लाइक आई माइट हेट मिस्टर फैसूज कंटेंट, बट आई डू सी दैट वेयर ही इज कम फ्रॉम, कि वेयर ही माइट नॉट हैव दोज प्रिविलेजेस. बट एज एन आर्टिस्ट, आर्ट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, राइट? It's freedom of expression essentially. It's a way of expressing your thoughts. But that's one of the criticisms of democracy. कि तुम्हारी अकल और किसी इंसान की अकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास हियर, उनको एक बराबर माना जाता है. समझ एक बराबर मानी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर. तो सिमिलरली जब आप कंटेंट की बात करते हैं, व्हाई शुड कंटेंट बी ओनली लाइक सिनेमा? व्हाई शुड इट बी ओनली विद सर्टेन पीपल? अगर ये लोग अपनी कहानियां, अपनी बातें बता रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? I'll tell you. Okay, so there is no problem with that. But what happened with TikTok was it was a structure made to make money out of democratizing content, which is a great. The first aspect of it is great. But now it pushed certain creators and certain type of content. Okay, you make these pillars, these this is what gets likes, this is what gets fame, and now everyone whom we thought ki if we give everyone tools to create, they will create their own art and their own this thing, right? But they see this one point ki this is successful, this gets me like, this gets you go. And now mixed with the dopamine effect of social media and likes and this thing, everyone is a copy of that thing. So it's not democracy, it is. ट्रेंड भी तो वही है. ट्रेंड क्या है? अगर एक ट्रेंड चल गया, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? But trend, the thing with trend is it's a temporary thing. This is a cultural shift.
trend is also a mob. It's a mob. Having said that, mob has negative connotations. Like I had crazy good engagement on Instagram. Not that I cared about it, because I don't have following there, and I agree कि मैं नहीं, I'm not built for that platform. But I couldn't keep up with the trends. मुझसे नई रील बनाई जाती 15 सेकंड की, मतलब मुझे आता नहीं है. इट्स नॉट कि मैं जज करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता. मैंने शुरू में बनाई, मेरी एक रील 10 मिलियन पहुँच गई. मुझे लगा गजब, मैं रील बनाऊंगा. मैंने अगली रील बनाई, मेरी रील 1 मिलियन पहुँच गई. और मेरे फॉलोअर नहीं है कुछ, आई हैव 30,000 फॉलोअर्स. बट इवेंचुअली आई रियलाइज ही नहीं हो रहा मेरे से, मैं उसके बाद बनाता हूँ. बट नाउ आई मेक फॉर द इट. बट ही इज़ राइट कि इट्स एसेंशियली, वो एक मीम वायरल हुई थी ना कि इंस्टाग्राम का एक लोगो खड़ा हुआ है यूं, हाँ, कह रहा नाच तो तेरी रीच मार दूंगा. so yeah, it's a mob. But I think this is a con and pro. Like this is what a free market is, right? You have to adapt to Correct. what the structure, what society sort of collectively decides to यही put on the platform. But no, the difference with TikTok was they gave you a framework to work in. They told you what will work. Like it wasn't that people decided that lip syncs are going to be वो thing. They made people really famous. Like टीवी की भी डिबेट थी, जो जब हिंदुस्तान में टीवी की मौत हुई तो यही डिबेट थी कि हम तो वो दिखाएंगे जो तुम देखोगे, और काउंटर आर्गुमेंट तो भाई हम तो वही देखेंगे जो तुम दिखाओगे. सो वो चिकन और एग वाली बात है कि ये दिस वाज अ कम्युनिटी, दिस वाज अ नेशन दैट यूज्ड टू वॉच कोरा कागज, दैट यूज्ड टू वॉच हम पांच, दैट यूज्ड टू वॉच Ramayana the animated film. हाँ नहीं, मेरा भी पॉइंट टीवी के अराउंड है कि हम द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, अलिफ लैला, भारत एक खोज, ये सब बेहतरीन शोज थे. तो हम हमारी परवरिश खासकर मतलब मेरी जनरेशन तक में चाणक्य, मालगुडी डेज, हम ये देख के पले बड़े हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, नागिन, वो बिच्छू, साला क्या क्या शो आ रहा है. अब उसका डिबेट यही है कि साहब दिस डाउनफॉल किसने है, मतलब टीवी कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं साहब हमने तो वो बनाया जो बिका, और जनता कहती है भाई हम तो वही देख रहे हैं जो बिक रहा है. सो इट्स दिस थिंग कि अगर व्यूज आ रहे हैं, अब रील से व्यूज आ रहे हैं, तो कोई क्यों ना बना यार. लाइक अगर उनको मालूम है कि जनता यही देख रही है. दिस इज नॉट लाइक रील्स तो बनानी चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कि जिस की जो ट्रेंड मॉब है, ट्रेंड और ये जो मॉब की कॉन्वर्सेशन है, भाई क्यों ना करे कोई, भाई जब वो चल रहा है वो क्यों ना करे. आई एम नॉट सेइंग कि चल रहा है ना करे. आई एम सेइंग कि देयर इज वन सोर्स ऑफ कि कौन चला रहा है. So if I say like what you're saying, that there's a bottom up, which I'm for it. Like if everyone decides कि this is what works, and out of which like few people do it really well and they rise on the top, which is great. What I'm saying is that if there's a company that starts this and they put people up there and then everyone adheres to it. So then anyways that's not democracy. नहीं देखो, मेरा डेमोक्रेसी इज नॉट रूल ऑफ the people, it's the rule of the majority. That's a mob. I mean that's questioning democracy altogether, which is a different conversation. But to just bring it back to TikTok. नहीं मेरा point or like short form content. मेरा point ये है कि anyway democracy is run by majority, कि जो ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं वही होगा. Yes, I agree that अगर एक content promote हो रहा है, एक तरीके का content promote हो रहा है, it's not entirely democracy. ठीक है कि भाई सबकी बात का इक्वल वेटेज नहीं है, बट टू टेक द एलिटिज्म आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मैं डेमोक्रेटाइजिंग की बात उस सेंस में कर रहा हूँ कि टेकिंग, अगर विद द करंट की एडिटिंग, फॉर एग्जांपल जस्ट रेवोल्यूशनराइजिंग हाउ पीपल वुड एडिट ऑन द फोन. Yeah, for sure. है ना, हाउ पीपल कुड डू स्लो मोस, कुड डू इफेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. राउरकेला में कोई बंदा बैठा होगा यार वो उसमें, उसके पास वो टूल्स दे देना ही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. आई जस्ट फाइंड दैट एम्पावरिंग. मैं एक और चीज का मेंशन करूंगा यहाँ पे, सिंस यू मेंशन्ड रिमोट एरियाज एंड पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी गेटिंग द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वीडियो वॉलंटियर्स एंड दे स्पेसिफिकली train and educate people in rural areas to tell their own stories. Great. Through basic equipment, through basic narrative tools, and they've been at it for far longer than any of these social media platforms.
but they don't get any attention. इम्पैक्ट नहीं है ना, But मतलब that's the thing. एट द एंड Actual real life impact. ना No, the इम्पैक्ट thing is that I think it's a you need a mix of two. करेक्ट You need a mix. You can't just be authentic, and you just can't be like a great skillful person. It has. What I mean is that if there's a great film not marketed well, व्हाट्स द पॉइंट? आई एग्री, मतलब दे माइट बी क्रिएटिंग सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज, बट हु आर दे टेलिंग इट टू? थिएटर को मैं मान के चलूँ कि प्रोसीनियम में जाना इज प्रिविलेज, कि आपके पास ऑडियंस है, ठीक है. स्ट्रीट पे लाना इज डेमोक्रेसी, कि आपको अलग से ऑडियंस नहीं मिल रही, आप खोज के लाओगे. लेकिन जब आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, देन तो देर इज देन मेजरली समथिंग इज अमिस. सो मैं वही कह रहा हूँ कि स्टोरी को बताने के लिए marketing is very necessary. Unfortunately, we live in that world. in a very interesting way, since everyone is consuming content and everyone is creating content. Like you are like, it's a famous quote, you are a concoction of the 7 people you hang out the most with. Like your identity, your character just becomes like you're a little like your dad, your fiance, your girlfriend, your friends, your best friends and stuff like that. You read certain stuffs and yes, Correct. And with content, I wake up with notifications on my phone. I sleep with the notification. हर वक्त तो मैं content consume कर रहा हूँ. और there are few creators that I create content, like I see जिनका देखता हूँ, because I do this. When I'm watching them, if this is the universe I'm living in, I'm creating उसी bubble में मैं feed करी जा रहा हूँ. Like everyone is a weird, different version of each other. That's what social media is becoming. मैं तो काफी क्राइसिस वाला सवाल पूछ लिया तुमने यार. हाँ, मतलब दिस इज क्वाइट अ थिंग यार, कि अगर सब कंटेंट बना रहे हैं तो देखेगा कौन? आई एम सेइंग फॉर द आउटसाइड, एंड आई नो फ्रॉम द आउटसाइड, बिकॉज मेरा थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है आउटसाइड दुनिया से एज कम्पेयर टू, एंड आई एम श्योर योर सोशल सर्कल इवेंचुअली बिकम्स दिस थिंग. मैं 8-10 घंटे इस ऑफिस में रहता हूँ. आई थिंक आई टॉक टू ध्रुव मोर देन आई टॉक टू एनी ऑफ माई अदर फ्रेंड्स. तो एक तमाम सोशल सर्कल यही बन जाता है. बहरहाल मेरे थोड़ी बाहर की दुनिया से अभी भी कनेक्ट है. फॉर देम इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मिथिकल वर्ल्ड, कि विष्णु कौशल मस्ट बी मेकिंग these many crores of money and look at what a life he has. कि भाई कुशा को देखो यार, भाई यार उसने कल उसने उसके साथ स्टोरी डाल दी, कल उसने इसके साथ. सो फॉर देम दिस इज अ मिथिकल वर्ल्ड. एंड मतलब मैं तो उस वर्ल्ड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ. तो जब वो मिथिकल वैल्यू मेरे साथ अटैच कर देते हैं ना, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई मुझसे बोलता भैया नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है. मैं कहा तेरे से क्या लेना देना, लाइक and that mythical value when they attach with me, I feel very uncomfortable. I feel very uncomfortable with the fact that people want to take pictures with me and this and that. But this whole mythical value and this whole value of कि ये करके लोग पैसा कमा रहे हैं, quote unquote, कि भाई उसको करने का पैसा मिलता है. This is exactly what it is. हाँ, but yeah, it is exactly what it is. But what's your perspective on it? And just to add to that, and you couldn't have put it better, जो लोग authentic बकचोदी करते हैं ना, they rise to the top. Like, मैं भी करता हूँ, but I don't have money. But you don't post it in a way which is. हाँ, I mean, both of that was I was just saying in jest. I'm talking about social media in particular. हाँ. Like people who are authentically themselves having fun on Instagram, जो होती है कि मतलब on social media with like the people that they sort of relate with, the kind of content they figure out a way. That's the content that works. But for sure. विष्णु, मेरा ये मानना है, and correct me if I'm wrong, social media genuine है क्या? Like Kusha and Zor, are they like that in real life? See, I mean, I'm giving their example because I know them personally. No, they're not. Taking Govind and Mera example, we made a video in lockdown, which was a normal video. We did exactly what the script was. ठीक है? Fast forward to like 2 months, 3 months. हमने वीडियो बनाई, हमने रिटरेशन होते होते वी वर हैविंग सो मच फन मेकिंग दैट वीडियो. हम हंस रहे थे बीच में, जोक्स के बीच, अपने जोक्स पे खुद हंस रहे थे. एंड ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग आउट. इट वाज जस्ट what was happening. जो हम बकचोदी बोल रहे थे वही आ रहा है. That those are the videos that went viral. No, I agree with what you're saying. That see, कुछ चीज़ें आप फोर्स नहीं कर सकते. लाइक कॉमेडी आप नहीं निकलवा सकते unless you are genuinely funny.
having said that, this whole notion of being genuine on the gram, I think कि मतलब मैं अगर बाहर से देखूं मुझे लगता है सब नकली है सब के सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड करेक्ट मी इफ no, you're right. I think like you have a character that you're presenting. Prapti has a character, or say Malika Dua has a character. Not the characters that they Play, but play, like but an identity of. an identity. And it may or may not be true because It is a formalized version. I'll tell you what. मतलब is it based on calculations? sometimes it is. Sometimes people have like these. You will see like sometimes you see like आज ये बंदा थोड़ा अलग लग रहा है. Like even in stories, sometimes like you see the realness, the genuineness. Sometimes you don't because everyone is figuring it out. Take office bubble, family bubble, friend bubble, social media bubble. I am a different person everywhere. Same with social media. It's a bubble. वही तुम दो वही हाँ, तो लोग. then what is the genuine person? मतलब देखो मेरे साथ तो ये है कि मेरी इतनी आइडेंटिटीज बन जाती हैं कि like for example I was at a dinner over the weekend and I cracked a joke and it was so funny that I couldn't say the joke only कि मेरे दिमाग में वो इतना फनी था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ and I eventually cracked the joke and the guy I cracked it to, he was also in the same, मतलब हम लोग पागल हो गए हंसते-हंसते. Now that's a joke I cannot crack in public. मतलब But isn't that genuine? Like that is क्या, a genuine. but no, but how is it genuine? मुझे एहसास है कि मेरा genuine self मैं कैमरा पे नहीं ले जा सकता हूँ. हाँ, but I think अलग-अलग जगह पे there is added social responsibility, हाँ. which is a genuine decision that you took that this is not something that I want to put because people will get influenced. So that is you being genuine. I have this understanding of हाँ, how. चलो you can call them etiquettes, netiquettes or rather. Oh, wait, Yeah, but coming back to what we were talking about, money. money. The idea of money, because I work with these things, I know what the overview is. But there is this mythological, not mythological, I don't know what the right word to that is. Enigma around the money in this industry. Correct. मतलब, and yeah, I think that's the word. कि अच्छा, you guys hang out with the best people, you guys go out to the best restaurants and this and that, like your lifestyle, this and that. Like, I'm sure YouTube में खोलूँगा विष्णु कौशल लाइफस्टाइल एक वीडियो होगा. मैंने ना देखी मेरी 25 लाख वर्थ है. वही. हाँ, मतलब आई एम श्योर मैं भी सर्च करता हूँ, कुछ ना कुछ होगा. और पता किसने डाली हुई थी? एक वेबसाइट है tiktokmag.com. Okay, that's something. But I think it's my friend explained it the best. It's instead of it being over a long term uniformly, it's in chunks, but you don't. It's very uncertain, and it's very. If it is calculated, if as a creator, whoever the creator is, if they plan it out right, because there is no age, at least right now, to not be a creator. There are 70-year-old YouTubers. There are like. You have to just transform with how the world is weaving itself. Ki if you're a creator, you can figure out a way to have a long career, is what I'm saying. I'm not saying कि 103 साल का बंदा वो करवाएगा नहीं. I'm saying that you can grow old and still make money uniformly as a creator if you figure out like the trends and if you like because platform Instagram भी like will be taken over by some other company. मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तब डीवी कैम होता था. विष्णु, यू माइट नॉट नो, इतना बड़ा एक कैसेट आता था, वो कैमरा में लगता था, उस पर रिकॉर्डिंग होती थी. एक बार मेरे एक इंटर्नशिप में मुझे डीवी कैम शॉर्ट करने को भेज दिया था, तो मैंने डीवी कैम काट दिए थे. तो मैं डीवी कैम से शुरू हुआ हूँ, मैं एक्सडी कैम पर आया, मैं सीडीज पर आया, मैं मेमोरी कार्ड पर आया, और इतनी तेज दुनिया बदल रही है कि मुझे लगता है कि इवेंट अभी तो आई एम कोपिंग अप विद इट बिकॉज मेरा दिमाग है, मैं आई एम रीडिंग द राइट थिंग्स. I have a fear that eventually technology will run past me. I will not be able to cope up with it. एक दिन कोई साला कैमरा ऐसा आ जाएगा, कोई फ्रेम ऐसे आ जाएंगे जो मैं नहीं समझ पाऊंगा, और उस दिन मैं irrelevant हो जाऊंगा मार्केट से, मेरी कोई वर्थ नहीं बचेगी. Giving a content perspective example, तरला दलाल अगर आज जिंदा होती, तरला दलाल इतना पैसा बना रहे थे कि जो 10 साल पहले बना रही थी. संजीव कपूर कौन पूछ रहा है यार आजकल? क्यों? क्योंकि टेस्टी आया, टेस्टी ने गेम बदल दिया. लोगों को नहीं सुनना संजीव कपूर क्या बता रहा है. So the pressure of, like you said, I agree कि ये हो सकता है, it is not impossible,
बट इट इज इम्प्रॉबेबल कि एक आदमी इतने वक्त तक सस्टेन कर पाए और रेलेवेंट रह पाए. यार relevant, taking a Sanjeev Kapoor example, there are so many food influencers who do recipes and do interesting things. They've learned the art of video making. It's not that they're just good at food. That is what I'm saying. The skill here is not the food. Chefs कोई खा के थोड़ा देख रहा है. How the do we rate chefs on Instagram? On social, there is no way to rate like content comedians, every fashion you can understand. How the do you? You cannot fake a laugh, but you don't know what to do with a cookery reel. How? But now the thing is that like, some chefs are more famous than others. No, see, The skill here is video. What I'm saying is I that agree, which is what I'm saying. कि shelf life for a influencer क्या है eventually? Like, what will you do, for example? And don't take me wrong. What will you do when you're 50 years old? Will you be? Are you confident that your content will still sell? मेरे को 10 साल में नहीं पता यार. This is the exuberance of youth But नहीं. that you and I might have, and I'll still call myself youth. But eventually, एक वो तो होगा कि भाई eventually this bubble might burst. It will burst. I know it. Or is it really a bubble? It is. So, in my head, this is my opinion, okay? Every now and then, like, lockdown was a cultural shift. The digitalization, like, when people started, the social media and digital content, like, came together. OTT started coming in, and all these things coming. That's quite recent. So, I think these are, like, checkpoints where you... The smartphone and data revolution. Yeah, with Geo and everything, like, it's just... So, these are shifts that we adhere to. Now, podcast. A lot of money in podcast. A lot of money. Because I hope. Because content अभी भी लोग explore कर रहे हैं. Like VR will come, virtual reality will come, AR will come. People will figure out a way to make a social media out of VR and AR. The rate of change in technology is so fast. It's scary. There is no way for us to even think that, like, have a plan. It's not practical to have a plan for Instagram for 10 years. Fair, but I think that's the scary part. It is scary, but at the same time, like, you have to. मान लो मतलब again TikTok लोगों के करियर थे बहन जो TikTok पे एक दिन बैन हो गया खत्म भाई रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो गई. It's like आपकी अंडे बेचने की दुकान थी सरकार ने बोल दिया अंडे बैन है आज से. तो आप क्या करोगे? आपको तो नहीं आपको अंडा ऑमलेट और हाफ फ्राई फुल फ्राई के अलावा कुछ नहीं आता. Like, this content will be a part of education eventually. मतलब समझा नहीं. People who've been great creators, Bhuvan Bam, or like these creators only start institutions that train people for social media. हाँ मतलब अगर I agree कि patterns तो हमें भी दिखते हैं. I mean once we create content, we also know patterns. We also There know are formulas. patterns. I have a real pattern. I know, like right now, this is a secret. So me, I know where and when to take a pause in a 15-second reel. What will get a laugh, and if we let out a laugh, if Govind and I laugh in a video, I know that works. मेरा पूरा करियर ही है. मैं कैमरा बैठ के हंसता ही दूँ और करता क्या हूँ. हाँ literally that's what I do. So I agree. So which is what I'm saying that patterns तो हैं. वो हमें भी दिखते हैं as not content creators but हाँ content creators only without faces. हमें भी दिखते हैं patterns यार. और yeah it's about time. I think वो खुलने वाला बहुत जल्दी. खोलें कुछ तो पैसा Kiss me हो सकता है. कुशा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मीडिया something. Nice name no? कुश Kiss me. तुम लगा Wix. Very clickbait as well. हाँ Wix लिखना. विष्णु कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ Which is content creation with K because creative. But right now, which will expand. Sorry, Money. right now how are people making money? मतलब जो मुझे Every way a corporation could make money, a big company, an influencer can make money in those exact same ways, and more, rather more. I'll tell you the more ones. So the basic one is the ad revenue. The basic होता है सबका. ad revenue है. Ad revenue YouTube का ad revenue आ गया. अच्छा मतलब हाँ ठीक है. Creator. जो channel जो That's the platform basic. revenue That's दे रहा the one that was a OG monetizer or whatever. But I feel Instagram is going to be such a great structure. Like you attract people through reels and through IGTV. So you have leverage to do both. You have to do both. Who's going to watch? I mean, maybe or maybe not, but
whatever. That's a conspiracy theory in my head. Anyway, coming back. So there's this thing. Then there is brand deals, which is the major. Which is the obvious one. Which is the obvious one, which is the major source of income. Then a lot of creators do merch, but India में merch नहीं करते हैं for some reason. I am not sure why. Yeah, a lot of creators do live events. They do these. People go give keynote speeches and all these things. These get paid. Then a lot of creators are now, thanks to Kusha Dolly and Prajakta, they're getting a lot of acting gigs. Talking about how you said that everywhere a company can make money, do you think in the near future people would actually pay to follow you, like Patreon जैसी चीजें हैं? Do you think that is the future going forward? Because I think it could be. Like आप pay per watch, like you follow him for 1 month, pay him XYZ dollars. Even though if that is the case, that's easily disruptible, and that's why I feel it's not. How? Anyone can come, say I'm going to do it for free. मेरी घर आ रही है, मैं free में करूँगा. करो. That's the thing ना. Why would anyone pay you when I can get it for free? Why would anyone pay Netflix when they can? Why would anybody pay to Alt Balaji when they can see Pornhub for free? People still do, right? No, that's fair. But what I'm saying is that these are easy. Like you I'm can saying- make these structures. But ये विश्व ये पैराडाइम शिफ्ट भी तो आएगा ना कभी. It can come. But लाइक YouTube फ्री में दे रहा था सबको, ठीक है? तो जब लोग फ्री में कंटेंट देख रहे थे तो काहे को पैसा दे रहे हैं नेटफ्लिक्स को 800 रुपये महीने का? बेहतर कंटेंट है, अलग कंटेंट है, फ्री में तो नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं. आई एम सेइंग फ्यूचर. I'm trying to project it even further. So you're saying that there will be individual Netflixes. There will be, and it is. If you see, all great technology has started with porn. With porn? With porn. Media industry में सबसे ज़्यादा adoption of VR and AR has happened in porn and gaming. VR सबसे पहले पॉन में ही आया था. ठीक है. OnlyFans porn में अपने आप को घोषित कर चुका है. हाँ. That OnlyFans has arrived. What? It will come to independent People creators. are making millions on OnlyFans. Just OnlyFans. So why would you pay money when you can see Pornhub for free? That's true. क्या लगता है तुम कितना चार्ज करोगे पर फॉलोअर? I want to do it. I just feel that it's not right for some reason. For now. For now, or at least I don't want my audience to pay to see me. Like, would you rather have a shit product to promote because of dearth of money, or would you rather get you people's money and do great content? Yeah, I mean, if people can pay money, if everyone is, because yeah, the thing is that I don't want people to be left out because they don't have money. Yeah, true. अरे सबसे बड़ी चीज यार, पानी बेचते हैं लोग भाई, पानी बेचते हैं यार. तुम तो पूरे कंटेंट बेच रहे हो. People don't get water because they can't pay for it. सरकार बेचती है पानी भाई. I think that's right, and like I wouldn't mind having this particular community who's like exclusive content, and everyone does that, and I will do that eventually as well, maybe. But like it won't be exclusive to that. That's what I feel as per current market. एट पर करंट, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात है, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इवेंचुअल फ्यूचर वो है Could be. लाइक इवन फॉर एज अ क्रिएटर ऑन यूट्यूब आई हैव अ फीलिंग दैट इवेंचुअली यूट्यूब का भी मॉडल वो हो जाएगा कि सब्सक्राइब 50 रुपए दो, नॉमिनल फी है 50 रुपए सब्सक्रिप्शन लगाओ धड़ाधड़, एंड लेट चैनल्स डिसाइड देयर ओन रेट्स. जो टेलीविजन में हो चुका है साहब, एनडीटीवी 10 पैसे पर मंथ है, सेट मैक्स 22 रुपए पर मंथ है. क्यों? क्योंकि सेट मैक्स क्रिकेट दिखाता है, एडवर्टाइजर से भी पैसा ले रहा है, सॉरी स्टार एडवर्टाइजर से भी पैसा ले रहा है आईपीएल दिखाने का, स्टार तुमसे भी पैसा ले रहा है आईपीएल देखने का. So you're saying कि everyone will be like an OTT in themselves. Everybody will be an entity in itself. Hi, what's the output of it? खत्म करो मैं. यार जिस साले खाना खाना है के बातें मार रहे हो. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर if you guys also think that some discussion we should have, anything that is worth discussing, feel free. अगर नहीं करोगे तो मैं I'll start discussing. Next podcast will be on Saif's baby's name. And how we're all gonna die eventually. Or what Harry said was true or not on Oprah's show. उसका बाप कह रहा फोन नहीं उठाता उसका बाप उसका. This was the first podcast. I hope you guys enjoyed it. Please अपने नाम बता देना हमें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस बारे में हम बातें करें और ज़्यादा करें. हमको भी ऐसे it's a nice way to for us to even keep learning as we are going it, because like
कॉन्वर्सेशन से ऐसी कॉन्वर्सेशन में बहुत फन होता है. फन तो होता ही है, बट लाइक वी गेट टू सॉर्ट ऑफ explore each other's ideas, and obviously we won't agree on everything or disagree on everything. But that's not the point of But that's not the point. This is not a debate. This is just two guys, three guys. or eventually many more. Many more, and having people on here, just having a good conversation. को नींद आ रही है, वो खाना नहीं खाया मैंने सुबह का. चलो. Okay. Thank you very much. First podcast done. Bye bye.